Sarabhai was a flop. My Sarabhai was a God. very big flop. I remember people started noticing me as Rosesh in 2009. Serial got over in 2005. And Randhir ji was, हाँ मुझे भी लगता है यार ये television में पक जाते हैं. See, Ranbir is very cool but very, very focused. So why I was cast for Animal was actually because the 6 months later, I get a call saying you've been confirmed for the role. They were waiting for you to grow old. They were waiting. वो और Tom Cruise दोनों बराबर में. Some injection, I think some injection. Let's spread rumor. I thought कि इसको पीने के बाद I'll be speaking like this. आज we are sitting with a family and वो family है Binny की family. This interview is skibbity burr. जब आप किसी फिल्म में काम कर रहे होते हो, of course we all have expectations कि ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, but हमें नहीं पता होता कि एडिटेबल पे हमारे कौन-कौन से सीन्स हैं जो सामने आएंगे. That is true. That is true. और and even अगर वो scenes आए फिल्म में तो कैसे दिखेंगे ये भी कभी पता नहीं होता because they also always shot like in various ways, है ना? What was the first time when you saw this movie and आपका क्या reaction था? You saw it before me. I saw it before you. Then he called me and he said, go watch it. And then they organized the screening for me. Then I saw it. Then we had a long conversation. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है राहुल? कि मैं एक तो अपने किसी भी शॉट को मॉनिटर पे नहीं देखता. अच्छा. I have something in me and then I do not watch my And why? So to be honest with you, I haven't watched the whole film at one go. अच्छा. मैंने टुकड़े में देखा है. There is something I just आप अपनी सबसे बिगेस्ट क्रिटिक है. क्रिटिक से ज्यादा ना पता नहीं मुझे एक अंदर से वो बैठा रहता है कि मैं ना देखूं तो चीजें ज्यादा चल जाती हैं. अच्छा ऐसा भी है. अरे वाह. तो बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने छोड़े हैं आज की डेट में वो 15 साल से चल रहे हैं. तो मुझे लगा कि कभी कोई छोड़ देना चाहिए. किसी और का भला हो जाएगा. So this is true. He actually doesn't watch scene करने के बाद monitor पे and मैं भी नहीं देखती. तो इसीलिए हमारे scenes इतनी जल्दी हो जाते हैं. What I prefer is after they are checking it on the monitor if it is done or not, I just listen. Yeah, even I feel that. I just listen. If I know the note is correct, the expressions will follow. I'm also watching the director's face when he's watching it because उनकी शक्ल से पता चल जाता है कि ये ठीक सुर है या नहीं ठीक सुर है. I remember I'm not always the one correct scene judge Binny And Family में एक फोन कट है जो फादर के साथ मैं बात कर रहा हूँ where I'm lying to him that do not get mother to London, you know, and I'm just lying. So that whole scene, that whole phone cut, the director was only giving me the cue and वो one shot में ही हुआ था. कट हो गया and there was absolute सन्नाटा and I saw the DOP मोहित कि उसके आंख से आंसू निकल रहा है and he just came and he hugged me and said कि सर क्या कर सकते हैं. तो मैंने कहा क्या दोबारा करूं. तो संजय सर कह रहे कि अगर दोबारा करोगे तो फिर ये सीन नहीं हो पाएगा. वाह. You know, something just some magic moment happened within you यार. So that's how. ऐसी तो बहुत कहानियां like this of course is a beautiful scene. मेरा एक सीन था इनके साथ जब मैं for the first remember that जब मैं for the first time इन पे भड़कती हूँ and बहुत इन पे मतलब and I make a point and many points and काफी लंबा सीन था वो 2 pages पे लिखा हुआ था. एंड हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे एंड आई थिंक वो बिल्कुल ही हमारा स्केड्यूल का एंड था. लाइक आई वाज शूटिंग एनिमल एट दैट टाइम आल्सो एंड आई हैड टू कम फ्लाई बैक फॉर दैट. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक ये सीन फटाफट खत्म करना है एंड मैम हैज टू गो टू द एयरपोर्ट ब्ला ब्ला ब्ला. तो थोड़ा जल्दी में हो रहा था एंड वो सीन में हमने एक बार किया, ठीक लग नहीं रहा था. तीसरी बार शूट करने के बाद आई लुक्ड एट द डायरेक्टर आई सेड सर ठीक था एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक था. Then I looked at us, आपको फीलिंग आई? He said फीलिंग आई. And then I told the director, I said, sir, can we reshoot this somehow? And because I'm not happy, like you know वो एक तरह से एक फीलिंग सी आती है, वो फीलिंग नहीं आ रही. Then he also admitted, he said मुझे भी फीलिंग नहीं आ रही. And you know this is what a good director does for you, you know. He said, you know, we will shoot it again. Wow. And then we could not go back to England to shoot that scene. So there were thankfully some other pickups that also were happening in Goregaon. So we recreated England and Goregaon.
And he kept half a day for me Yeah. to shoot that scene, just that scene. And we did it. And for one take mein, And Sanjay sir was sitting behind the monitor, and the DAs tell me he was sitting like this. And as I was speaking, he was like, yes, correct. Yes. And वो जैसे ही वो cut हुआ, Yeah. Rajesh gave me a hug. Anjani came downstairs. She's like, yeah, that's really it. And Sanjay ji came and gave me a hug and said, we got it. We don't have to shoot it again. But तुम्हारे सवाल का जवाब मिला कि नहीं? बिल्कुल हम लोग बात करते रहेंगे. That is what we are here for. Listen, we can talk endlessly. Endlessly. Oh, And if we have someone with whom we love talking, Yeah. Arey. listening to, That's so and so listening to, and serious. listening to you is Coffee आ like, गई. you गरम know, it's पानी. my. अब कॉफी भी आ रही है. आप इसको why don't you make That's this for black starters. coffee? So for an artist, हम इसी फिल्म की बात करेंगे for Binny and Family. कौन सा एक ऐसा सीन जिसे करने के बाद आपको लगा होगा कि ये फिल्म ना तोड़ के रख देगी, मतलब ये बहुत जबरदस्त आने वाली है. इनका सीन है एक्चुअली, जिस सीन में लड़ाई होती है बिन्नी के साथ हाँ, और आप जोर से उसको चिल्लाता हूँ मैं. डराते हैं. और उस सीन में मतलब मैं बिन्नी के साथ बैठी हुई थी और बिन्नी भी बेचारी ऐसे हो गई और मैं She भी ऐसे हो गई. I'll tell you that story. बताओ ना वो कि she actually started crying. She actually started crying. Everybody was. I was feeling really Because scared. nothing was prepared or nothing was rehearsed by me. I And just after, rehearsed you the know, he's lines. such a cuddly bear. He's such like a lovable fellow. And even in the film, इनका जो character है वो बहुत lovable है, बहुत ही like a huggable, you know, dad who's just too cute. And तो उस scene में जब वो जोर से उसको कहते हैं shut up, oh my god, like हम सभी ऐसे हो गए थे और बिन्नी तो बिल्कुल ही. No, she started And I crying think but that was she her did not best stop moment. the scene. No. But I could see कि suddenly teary eyes हो गया उसका. Yeah. I said now she's got the reaction. Yeah. I was happy that मैं वो flare up हुआ जबकि shot उसी का था, मेरा सिर्फ shoulder था. I could have saved my energy. But now if you see the scene ना तो उसमें खराश हो गई है because 3, 4, 5 बार चिल्लाने के बाद आवाज बैठ जाती है ना. So मुझे पूरा scene के effort लग रहा है बोलने में. But then I think yeah, you were right. That नहीं, scene I is think good. that is one scene which is really good. And maybe the other scene, एक बहुत ही क्यूट मोमेंट है जब दादा दादी लंदन से जा रहे होते हैं एयरपोर्ट की तरफ, तो राजेश इनको गाड़ी में बैठा के निकल जाता है और बिन्नी एंड आया सिंह bye, and then we're actually like we're looking sad कि oh bye, see you later, but we're actually very happy. So then this turned into this. And this happened very spontaneously between Anjani and me, and then we go back into the house. It's such a cute scene, and ये वाला जो scene है ये ऐसे ही हो गया. It's not a written scene. ये बस आ गया कहीं से inspiration. ये वाला जो scene है, the audience has also, many people have told me कि वो that moment where you're like, oh bye in-laws, see you later. Yes. It's so real. आपको क्या लगता है कि which is that one thing people have loved through the ages? Sarabhai versus Sarabhai. यार जिस समय किया था ऑनेस्टली सिर्फ इतना पता था कि जब मैं ऑडिशन दे के आया था आई जस्ट सैट डाउन ऑन द फ्लोर एंड माय सिस्टर वाज देयर एंड शादी हुई थी मेरी एंड द फर्स्ट वर्क शादी के बाद मेरे पास जो हुआ था वो साराभाई हुआ था. सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द ऑडिशन एट 10:30 एट नाइट. 10 बजे तक चला था, 10:30 से 11 बजे घर पहुंचा था एंड आई जस्ट सैट डाउन ऑन द फ्लोर एंड आई सेड कि इफ दिस शो हैपेंस फॉर मी इट विल चेंज माई लाइफ. आई जस्ट हैड दैट कन्विक्शन. I never, and after that show happened, after it was declared flop, for 1.5 years it was declared. I didn't know. Yeah, I didn't know. Sarabhai was a flop. Hey. Sarabhai was a very big flop. अच्छा. Yeah, because उस समय क्योंकि कहानी KBC सब चल रहा था, and they were having TRP of 25-30 in television, where Sarabhai was having TRP of 1.92. And it was a weekly show and it was on a new channel, so no one watched it. Oh my god. It was a big flop. Sarabhai picked up only in 2008, 4 years after it went off air. Really? Yeah. Oh my god. Because there were over 21 reruns which happened on Star One. So whenever they had to launch a new program on certain slot, they used to run Sarabhai every day. Oh. So when it became daily soap kind of a thing, those 70 episodes got repeated over 20 times.
And then people started noticing it कि ये कुछ है ये because I remember people started noticing me as a Rosesh in 2009. Serial got over in 2005. My God. Yeah. That is is really strange. That is crazy. strange. I did not know this. Yeah, exactly. I always think of Sarabhai versus Sarabhai as such a like a Yeah. Benchmark. We used to shoot 10 minutes, 12 minutes a day, 2 camera setup पे 4 सीन 5 सीन करते थे दिन भर में. But वो फिर इतना जमा टिका के होता था ना और इतने फन के साथ होता था कि वो 1.5 साल कब निकले वो भी नहीं पता चला. बट ये जरूर पता चला कि सीरियल फ्लॉप है, लोग देख नहीं रहे हैं, तो 70 एपिसोड में ही बंद कर दो यार, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें. सो इट गॉट ओवर बिकॉज ऑफ दैट. फ्यू रिएक्शंस वर देयर इनिशियली, और वो रिएक्शन लाइटमैन्स का था. अच्छा. क्योंकि इतना सोफिस्टिकेटेड होने के बाद भी ऊपर तराफे के ऊपर जो बंदा लाइट लगा रहा होता था ना, वो हंस देता था. तो उसको बोलते चुप रहना. तो आपको समझ आ गया कि So तब मुझे लगा कि this character has some potential and this show definitely has so much to offer here. And still like, yeah, it's on. Charu, you have played a very iconic role abhi and it will definitely be a benchmark for your career as well. जहाँ पे हमें अब आपको देख के लगता ही नहीं कि आप रणबीर की मम्मी बन भी सकती है. बेटा रणबीर और बिनी एंड फैमिली में हस्बैंड ऋषि. तो when you were on the sets और आपके सामने मतलब again आज राजेश जी हैं, उस दिन अनिल एंड रणबीर साथ में होते थे. How was that feeling? See, Ranbir is very cool but very very focused. और Animal में उसका रोल भी थोड़ा सा it काफी intense था. और हमारे सारे सीन्स जो थे वो बहुत इंटेंस सीन्स थे. तो जो हमने सबसे पहला सीन जब शूट किया था, and that was the first time I actually met him. उससे पहले I had met the director, I had met Sandeep ji, and I knew Anil sir from before. We were supposed to do some other work together. तो उनके साथ मीटिंग बहुत फनी थी because many years ago कुछ हमें एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि I was cast again as his wife. And तो हमने थोड़ा बहुत शूट भी किया, and उसके बाद it didn't work out for me because they just sort of somebody else got that role, but I had worked with him. So and बहुत सालों के बाद हम फिर एनिमल के सेट पे मिले, where again I am cast as his wife. So जब मैं सेट पे पहुंची तो he was very sweet. वो आए मुझसे मिलने, hi, I'm Anil. And I was like, I know. And then he said, so welcome to the set, this that. फिर वो मुझे देखा था, अरे you were supposed to be on blah blah blah. And I was like, yes, me. And he's like, you're playing Jyoti, my wife. I said, correct. So he's like, ye to destiny. I said, yes, sir, universe meant for this to happen. Then he looked at Sandeep and said, Sandeep, do you know this? You know that we were supposed to do this together. Oh, wo pata nahi kyun nahi hua. And did you know this now? Look, destiny has brought us together. Sandeep's like, I did not know this. So that broke the ice, like you said, and then of course Anil sir were like, "Arey, we are friends," and all मेरे तो सारे scenes उन्हीं के साथ थे. And all of them, they were like very intense. जितने भी They were very intense. And so why I was cast for Animal was actually because of the starting of the film. तो अगर आपने film देखी है, film starts with me, and Sandeep was very clear when उनके office से directly मुझे phone आया था कि I want Charu Shankar to play this role. So please ask her to come and meet me. So I said okay. तो मैं गई मिलने, and I entered his office and he's looking at me. He said, "Oh, I thought you would do well for this, but अब आपको देख के लगता है आप तो थोड़ी young हैं." So I said, "रोल क्या है या कुछ तो बताया." अब मैं आ गई तो कुछ. So he narrated the whole story to me and he said, "देखो आप बिल्कुल perfect है to play the mother of the animal character when he's a little boy." वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द फिल्म में 5 मिनट में आई वांट टू सेट कि ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है कि बाप और बेटे के बीच में ये एक बहुत अजीब सी रिलेशनशिप इज डेवलपिंग, एंड द ज्योति हैज टू पुट दैट अक्रॉस टू बलबीर, अनिल सर's कैरेक्टर, एंड टू द ऑडियंस. तो उसके लिए आई थिंक यूड बी परफेक्ट. But then that little boy grows up and becomes Ranbir. Then what will we do? Then should we get another actress? कि वो बहुत ये हुआ. So I had already shot Rocket Boys at that time. और मेरे पास उस समय I had some photographs of myself as Mrs. Indira Gandhi on the phone.
So मैंने कहा कि सर देखिए एक्चुअली यू नो मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है और मुझे तो क्राफ्ट से मतलब है एंड आई थिंक कि मे बी आई कैन डू दिस. देखिए मैंने अभी अभी ये काम किया एंड दिस इज मी. तो ही लुक्ड एट द फोन एंड देन ही वेंट यू दिस इज यू. ये हुआ कैसे? So then of course I told him ये हुआ कैसे. And then he said अच्छा ठीक है, we'll give you, we'll let you know. 6 months later I get a call saying you've been confirmed for the role. They were waiting for you to grow old. शायद थोड़े nice Rajesh. और दूसरा ये भी है कि हमारे जैसे एक्टर हमारी त्वचा से उम्र का पता चल जाता है. तो हमें जवान देखने के लिए ना जवान बीवियां ही चाहिए. I see. अनिल सर एवरग्रीन जवान है ना, वो और टॉम क्रूज दोनों बराबर पे. सम इंजेक्शन, आई थिंक सम इंजेक्शन. लेट्स स्प्रेड रूमर. I am not saying anything. Please notice. आपको अगर एक जनरेशन अल्फा या जेन जी वर्सेस योर जनरेशन, आपको एक चीज पॉइंट आउट करनी हो कि ये चीज इस जनरेशन में शायद गलत हो रही है, तो वो क्या होगी? Language? Language. क्या बोलते हैं यार? Like your question is so sick. Yeah. I never And knew कि sick. I like your hair. sick It's got is used. riz. This interview is skibbity blur. What do you think, bro? I think सबसे ज्यादा जो भटक गया है ना वो भाषा भटकी है. बहुत ज्यादा. Oh, what is the skibbity? और What is it? वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम, यू नो, उनको खींच करके लाना कि यार नॉर्मल हिंदी बोल लो. आजकल जैसे मुंबई में खास करके होगा शब्द हट गया है, होएगा हो गया. होएगा. हाँ, सो व्हेन दे राइट आल्सो इन पेपर्स वगैरह होएगा लिखते हैं कि ये शायद उसका बाप होएगा. Arey, this morning I was dressed up for the interview and my son comes and tells me, Mom, that's drippy. I was like, what is it? I don't understand. Yeah. I'm an English literature student. I don't get it. So thank you very much, Rajesh and Charu. Thank you. Lovely Thank you. Thank you. Such a pleasure. Thank you. Such a pleasure. 107.2 Punjabi fever. हो गाड़े बजण दो